So, my dear students, if you are a good aspirants of these sectors, including law, managerial, soldier, administrator, journalist, bankers, no matter what would be your domain subject, but it is a standard, must be belong to the category of mainstream subjects of humanity. Then you have to adopt a proper strategy on the basis of everything of something and something of everything. So something of everything would be different for the different type of aspirants, but everything of something is common for the all types of aspirants. All aspirants who has priority for these sectors. My dear students, first of all, you have to decide some phenomena, ideas, practices as everything of something. Globalization demands imperialism. Imperialism demands industrialization, or nationalism change into ultranationalism that produce imperialism, or that produce a new world that is known or may be considered as the present existence of world as globalization or IT revolution. तो आईटी रिवोल्यूशन और ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए इंपेरियलिज्म को समझने के लिए नेशनलिज्म और उग्र राष्ट्रवाद, अल्ट्रा नेशनलिज्म, एंड फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म को आप नहीं समझ सकते विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड्स द क्लियर कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द Renaissance, and Renaissance demands clearance about the Dark Age. Dark Age cannot be understood without the clear conceptual information, fundamental awareness about the early societies and civilizations. So that is proper just way is revealed before you. My dear, many thanks. A lot of thanks. But it is a matter of concern. You must have to say how do you find these episodes available on Markandeya Mission. So comment, share or subscription is requested to all of you. If you find that here is something going in the favor of, in the interest of society, student and nation, you have to react or contribute yourself in a form of a comment. How do you find this video? And what type of reforms, amendments, change would be better for this platform to contribute more accurate, just episode to fulfill the needs of aspirants of these categories, including law, managerial, soldier, administrator, journalism, and bankers. If you want to be transform yourself into a good job holder in these areas, you have to adopt the main subject, domain subject from the category of humanities, or you have to whatsoever, regardless of your domain subject, you have to be aware about the everything of something that includes 80% of your subject content. और जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे, ग्लोबलाइजेशन को जान लोगे, इंपेरियलिज्म से अवेयर हो जाओगे, नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म और वर्ल्ड वार को रिलेट कर लोगे, और वो रिलेशन तब तक बनेगा नहीं जब तक आप फ्यूडलिज्म को नहीं जानोगे, डार्क एज को नहीं जानोगे, और डार्क एज के पहले अर्ली सोसाइटी और सिविलाइजेशन और अर्ली एम्पायर्स. तो इंडस वैली से लेकर के नरेंद्र मोदी के इंडिया तक, न्यू इंडिया तक की यात्रा को समझने के लिए
हम लोग इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और इस कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के सेवा के लिए अपने को तैयार करना चाहते हैं, आपका डोमेन सब्जेक्ट तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का होना ही चाहिए, साथ ही ए स्टेटिस सबके लिए होना है, सबके लिए इक्वल मतलब इम्पोर्टेंस का है और सब लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए टू बी अ गुड job holder in these areas of modern national and international affairs. Many thanks to all of you. Let me allow to end this session. Jai Hind, Bande Mataram.